you to use your chat box. आप अभी कहाँ पे है 0 to 10 rating में stress level पर? Yes, all of you please participate. You are assessing yourself actually. And let me see. 0, fantastic. Fantastic. 0, good. Very good. 5, okay. 5. And please feel free, even if you are don't think that others are putting it 0, so I should also know it is their life. So let us become very honest also, because ultimately your life matters to you, isn't it? And I request all of you, here I think more than 80 people are present. 5, okay. So किसी का 5 के ऊपर नहीं जा रहा है? 2, रोशनी, very good. Wow. So मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टिप्स का जरूरत नहीं है, because already people are handling their stress. 4, Pramila, good. All of you, please. 6, very good. Okay, fine. So stress is not necessarily bad. Some kind of stress is required. I'm giving an example. Children at home, if there is no exam stress, nobody will study, isn't it? Nobody will study. If everything, if we are born with a free ATM card, will you do something, anything? No. We are doing each and everything just because we need to survive first. Yes, stress is fluctuating. Yes, Pramila, absolutely correct, because it depending upon the situation to situation. But on an average, I am asking on an average, what is the level of stress on an average? Sometimes you are traveling somewhere, you are with your family, with your friends, enjoying holidays, then naturally there is no stress. So stress is not always bad. It helps us to survive. It helps us to adapt. Why adapt? Let us understand. Whenever you will understand that the situation is giving us a pressure, you will learn, if you are in the mindset to reduce your stress, reduce your pressure, you will think how to come out of it, how to reduce my pressure, and to survive first. And then we'll see life is not for only the survival. It is all about flourishing your own hidden potential. That is very, very important. We should remind actually every day we are human being, the best creature in this planet, who have immense of potential and the power giving that you can go beyond, where no other creatures are given this power, only human being. That is why human are called, only human are called being. Why being? Because nature thinks that human should know how to be irrespective of circumstances, irrespective of pressure. We can adapt, because the faculty or the tools, technologies of this adaptation to live in a better life is available here right now within ourselves. We need to spark it. That's it. So how to spark, we'll discuss today. Next slide, please. So here, let us see the stress curve. If you have no pressure, nothing, you will feel boredom sitting at home, right? Then still little bit of work, you will enjoy your comfort. Here you are in this planet, not only for comfort, to serve. So that is why I told I am extremely privileged to speak something in front of those people who have decided to serve to people, decided their chosen their profession to serve. So you will be in the comfort zone. Next, your optimal performance is always required. In whichever level, in whichever profession you are, you
you will feel, you will experience, if you are doing your best, you have decided the life is for some kind of service in any form of profession, even one housewife also, that मैं क्या सर्विस करती हूँ, बहुत बड़ा सर्विस है इवन अ हाउसवाइफ ऑल्सो. तो हाउसवाइफ के हिसाब से वो कितना बेस्ट डाल सकते हैं परिवार के लिए, दिस इज द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. एज अ प्रोफेशनल पर्सन मैं मेरा वर्क प्लेस में कितना बेस्ट डालना, और उससे सिंस इट इज अ प्रोफेशनल गिव एंड टेक, वी आर गेटिंग मनी ऑल्सो, राइट. सो मैं संतुष्ट हूँ और मैं मेरा बेस्ट डाल रही हूँ. दिस इज द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड दैट इज द स्ट्रेंथ. नाउ द बियॉन्ड दैट, while we go while we stretch ourselves beyond that, it becomes very tedious task for us. वो बहुत मुश्किल होता है उसको लेके जाने के लिए. ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हो गया, हम संतुष्ट है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है वो हम ले नहीं पा रहे. घर जाके इतना थकावट लग रहा है, किसी के साथ बात करने का मन नहीं हो रहा है. तो ये कैसा सर्विस है? अगर ऐसा डेली बेसिस में, कभी कभार ठीक है. अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, प्रीवियसली वुमेन यूज्ड टू चूज द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. व्हाई? बिकॉज छुट्टी मिलता था, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन एंड दीज थिंग्स, एंड वर्कलोड कम. अभी टीचिंग प्रोफेशन, जो मेरा दोस्त लोग हैं, लोग बताते हैं टीचिंग प्रोफेशन में काफी सारे प्रेशर है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ता है. तो किधर भी अभी काम कम नहीं है, और काम कम होगा भी नहीं. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी को अगर रिक्रूट कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा बैक ऑफ माइंड वो रहेगा, मैं कितना बेस्ट उससे मुझे मिले. तो काम कम नहीं होने वाला है, वो फॉर श्योर. अगर मुझे काम करना है, वो माइंडसेट लेके ही काम में जाना है. मुझे मेरा बेस्ट देना है, देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई विल सफर. अभी बेस्ट देने के लिए जो तैयारी है खुद के साथ, वो खुद के साथ है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है. जब भी कुछ चीज जब गलत होता है, दैट विल सी. अदरवाइज डेली बेसिस में कुछ गलत नहीं होता है, काम का प्रेशर आता है. हम काम के साथ कैसे एडेप्ट, इसलिए आई से वी हैव द एबिलिटी टू एडेप्ट विद द स्ट्रेस. सो इससे भी अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, विच इज नोन एज, आजकल का कॉमन वर्ड है, विच इज बर्न आउट. बर्न आउट मीन्स एक्सट्रीम स्ट्रेस जो हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम दे रहा है. दैट विल ऑल्सो सी व्हाट आर द सिम्टम्स हैपन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है समझ लेते हैं. एक है वर्क प्लेस, दूसरा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नेक्स्ट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम. रिलेशनशिप प्रॉब्लम घर पे, बाहर भी, नेबर के साथ. आजकल जिन लोग इधर पेरेंट बैठे हैं, शायद किसी किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना, बच्चा मम्मी पापा के साथ जुड़े हुए रहना, और एक अच्छा जिंदगी के तरफ चलना, वो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल. जो एक रिलेशनशिप सबसे प्योर माना जाता था, पेरेंट चाइल्ड, नाउ इट इज बिकमिंग सो, because my daughter is 20 years, from her I hear the things that are going on outside. This is such a horrible and painful indeed. Children are telling, there is no such communication between the parent and child. They are telling मम्मी मर जाए तो अच्छा. अभी सोचिए, तो ये हर एक का नहीं हो रहा है. ऐसा क्या हमारा जमाना आ गया जो एक बच्चा ऐसा बोल सकता है? बच्चा और पेरेंट भी, जाने दो, जो करने दो, अगर बात नहीं सुन रहा है छोड़ दिए. हम छोड़ने से कैसा होएगा? तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेस ऑफ वुमेन स्पेशली that is happening in the relationship issues, as well as this relationship with the spouses, with in-laws, and also workplaces. Now just imagine, so many things women especially need to accommodate, as well as men. I'm not denying that. Children are one of the nowadays. Previously it was the children are the source of happiness, because parents, when they are deciding to bear a child, because it's a decision to become father or mother, so this is a decision.
What for? Because the child will enhance our happiness. But the child, if it's reducing our happiness, so what kind of decision we have taken? Anyway, for the parents, we need to take the commitment that this is the next generation, we need to take care. Along with our professional work, why I am focusing it, because it is my daily experience talking with the parents, that what kind of stress they are having along with their professional work at home. Also, different kinds of stress. So these are the basically the source of stress that happens, which if we can categorize in a broad way. Next slide, please. Yeah. So whenever stress happens, how to understand in the physiological level? If you are having regular basis headache, because I have seen when I was working in college, ladies especially, as well as gents, both of them, I have seen to carry painkillers. Headache ho raha hai. Either they are drinking tea or coffee frequently, number of times. This is not also good for our health frequently. Or they are popping pills daily basis. So क्योंकि हेडेक हो रहा है, माइग्रेन का किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, एंड माइग्रेन प्रॉब्लम is coming from the stress level. One of the biggest source is stress. If you reduce stress, your migraine will be without any medication, you can reduce this migraine problem. Chest pain, many a times we feel it is a heart attack. No, but yes, I cannot deny that वो heart attack भी हो सकता है. जो मैडम ने बोला वो हार्ट अटैक नहीं है, अगर हार्ट पे पेन करना है वो भी चेक करना है. बट इफ स्ट्रेस इज इमेंस, बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस है, चेस्ट पेन भी होता है. दीज आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन. एक्सेसिव टायर्डनेस, घर जाने का बाद बात करने के लिए मन नहीं लगता है. एक्सेसिव टायर्डनेस. नाउ एक्सेसिव टायर्डनेस हो सकता है बाकी भी कोई कुछ एक डिजीज ग्रो कर रहा है, वो भी कारण हो सकता है. लेकिन अगर स्क्रीनिंग कर दिया, सारे ब्लड टेस्ट और जितना सारे आजकल टेस्टिंग अवेलेबल है वो साल में एक बार सबको करवाना चाहिए. जो फिजिकल ऐसा कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है तो फंक्शनल प्रॉब्लम है, दिस इज स्ट्रेस. आपका डेली बेसिस में कैसा स्ट्रेस महसूस होता है. Then stomach related issues. If you are facing stomach related issues like constipation on a regular basis or loose motion on regular basis, I'm talking about, you need to check your thought process. If anybody you know or those who are attending here, if you feel that you are having also your problem of constipation, it is not only connected with your bowel problem, it is similar manner connected with your mind. You just check your thought process on regular basis, whether you have anxiety, overthinking, any kind of challenges makes you more tired, you just check it. Or do you have the personality trait? If I refer the Piku movie where Amitabh Bachchan was playing the role, where the entire movie was on this constipation, showing what was his personality trait, all the time overthinking, he was thinking about his intestine. So those who are suffering from any stomach related issues, you just check your thought process. You will get the answer. Next, dry mouth. गर्मी का मौसम में अभी ड्राई माउथ होना वो नेचुरल है. अगर रेगुलर बेसिस में हो रहा है, yes, you should check with the, because nowadays many diseases are growing. So along with that, if you have checked that, ensure that there is no other diseases and dry mouth हो रहा है, you need to check your thought process. क्या कुछ anxiety है, क्या कुछ frustration है, stress है क्या. Excessive sweating. एक्सेसिव स्वेटिंग पहले कहा जाता था कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज या हाई ब्लड प्रेशर, ये स्ट्रेस के कारण में भी हार्ट. अभी हार्ट प्रॉब्लम जिन लोगों का है, एक एक करके सबको पूछ लीजिए थॉट प्रोसेस कैसा है, सबका आंसर आ जाएगा. जो एक्सट्रीम स्ट्रेस जो हम हैंडल नहीं कर पाए. मसल पेन, वन मोर, arthritis, those who are suffering from arthritis, especially ladies,
घुटने का दर्द है, you ask them, because now I'm taking one training session. So where I asked that, she was telling, yes, my mother has arthritis. Then I asked, what is the thought process of your mother? She said, yes, she is very negative in nature, because always डर है, fear है, anxiety है, overthinking है. So those people are suffering from arthritis. Just check these symptoms are present or not, and whomever you know, you can ask them. So reducing the stress and the thought process are very, very important. Next, sleep problem. Sleeping ऐसा एक चीज है जो नॉर्मल है, नेचुरल है. वो नेचर ने दिया हुआ, क्योंकि वो रेस्टिंग पीरियड में हम एनर्जाइज हो जाता है. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस. आजकल सोने के लिए जो नेचुरल है, वो सोने के लिए भी many people are taking the pill. और ये अगर एक्सट्रीम हो जाता है, this is known as in the psychological terms insomnia, or the psychiatric world. So insomnia के लिए भी बहुत लोग सफर कर रहे हैं. नींद नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? हम पिल ले रहे, लेकिन वो नहीं चेक कर रहे हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है और उसको चेंज कैसे किया जा सकता है. बहुत लोगों को आइडिया भी नहीं है वो चेंज हो सकता है. सो हियर आई एम to give the assurance you can change everything. But the thing is, if you decide to change, your decision is the ultimate thing. What you have decided about your life, how do you want to see yourself in your future? Even if you are currently under stress, or currently the way you are leading your life, I want to see my life in this way. You can change it, because the power lies with it. So appetite problem, sometimes people are eating junk food. This is a very common thing. They're working, they're eating tea or coffee. Nowadays addictions are increasing like anything, substance, and this alcohol, this drugs, then gadget addiction. Why? To reduce stress. मुझे अच्छा, एडिक्शन का एक ही कारण है. एडिक्शन में क्या मिलता है सबको पता है. जो भी इन एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्यों मुझे उधर अच्छा लग रहा है. तो बाकी टाइम वो एडिक्शन बिना क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि मेरा इतना लोड लग रहा है, ओवरबर्डन लग रहा है, मुझे सहन करना नहीं आ रहा है उस गैजेट से या कुछ सब्सटेंस से या जंक फूड से. मुझे थोड़ी टाइम अच्छा लग रहा है. दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ एडिक्शन. एक्सट्रीम स्ट्रेस अनेबल टू हेल्प यू. So high BP, diabetes, cardiac issue, many more, even cancer, all are the root of extreme stress that is happening for a longer period of time. So is it not important to address, to live a life the way we can reduce our stress to a level where we can take our, in that case, peak performance. Next slide, please. Now, cognitive symptom means the way we perceive things in our neurological level, in our brain level. अगर एक्सट्रीम स्ट्रेस है, मेमोरी प्रॉब्लम, हम भूल जाते हैं. अच्छा वो ये काम भी करना था, मैं एकदम भूल गई. कभी कभी गैस ऑन करने, गैस ऑन सिंक में है, चले गए हम नहाने के लिए, मैं भूल गई और दूध जल गया. एक्सट्रीम स्ट्रेस. इनएबिलिटी टू कंसेंट्रेट, मुझे कंसेंट्रेट करना किसी में नहीं आ रहा है. दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस. पुअर जजमेंट. अच्छा ये करना है या वो करना है, ये डिसाइड करना है या वो डिसाइड करना है. तो समटाइम्स वी थिंक दैट वो हमारा जजमेंट तो है ही नहीं. ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेस की वजह से. हमारा स्ट्रेस ब्रेन लेवल पे हम राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो बोलते हैं. राइट side of the brain is the emotional brain, creative, and the left side is logic, decision making, problem solving ability, these things. तो जजमेंट जरूरत है आवर लेफ्ट ब्रेन का. लेफ्ट ब्रेन तभी काम करेगा जब भी हमारा राइट ब्रेन अच्छा से बैलेंस्ड है, इमोशन बैलेंस्ड है. स्ट्रेस मीन्स here you are feeling fatigued, your right brain is imbalanced. right brain imbalanced है, left brain जो logic brain है वो चलेगा नहीं अच्छा से. और
जो परफॉर्मेंस ब्रेन बोलते हैं, आवर जस्ट बियॉन्ड आवर बिहाइंड आवर फोरहेड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। दिस इज द सी ऑफ आवर ब्रेन फॉर आवर सक्सेस परफॉर्मेंस। इसके लिए हमारा जो राइट ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट। देन सीइंग ओनली द नेगेटिव थिंग्स, हम सब में नेगेटिव देखना शुरू हो जाता है। ये हर सर्कमस्टेंसेस में कुछ पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। जब एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है हम भूल भी जाते हैं, जो हम उस सिचुएशन को भी दूसरी तरीका से देख सकते हैं। सीइंग ओके, एंग्शियस और रेसिंग थॉट हमारा हमेशा इवन नींद में भी चलता रहता है। एंड ड्यूरिंग आवर स्लीप सबकॉन्शियस, जो मोर देन 90-95% हम वर्क कर रहे हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड में, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। कैसे प्रोग्राम्ड है? चाइल्डहुड से प्रोग्राम्ड है। जैसे हमने सीखा, कुछ कुछ चीज जेनेटिक्स है, कुछ कुछ चीज देखा, हम स्कूल कॉलेज से सीखे हैं, हम आजू बाजू से सीखे हैं, वो प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस में फिट हो गया, बिलीफ सिस्टम फिट हो गया। सबको देखा स्ट्रेस लेके चलते, तो हम भी मान लिया स्ट्रेस लेके ही चलना है और मरना भी है। सो उस जो प्रोग्रामिंग है दिस सबकॉन्शियस में बिल्ट है ऑलरेडी। वो सबकॉन्शियस माइंड रात को हम सो जाते हैं, बॉडी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस नहीं सोते हैं। अब सोने का पहले किस तरीका से, किस माइंडसेट से, किस थॉट प्रोसेस और किस फीलिंग से आप सो गए, that will determine the subconscious is cooking the entire day. That is why it is extremely important, remember please, that सोने का पहले कुछ नेगेटिव चीज ना देखे, न्यूज स्पेशली, न्यूज़पेपर no before you sleep, gadgets no. That is why it is told that half an hour prior to your sleep you should not use this. You can read a very good books, this is very nice, or chant something, or you can pray, you can write your daily note. So I will give you the task today to continue this for rest of your life, how to make the journaling before you go to bed, to enhance your life. So constant worrying, हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए प्रोफेशनल जो प्लेस है उसको लेके कुछ ना कुछ सोच, नेगेटिव सोच तो चलता रहता है, लेकिन नेगेटिव सोच चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Emotional symptoms. Nowadays, depression has taken a toll. People, बहुत कम लोग इंडिया में लोग प्रोफेशनल हेल्प ले रहे, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे। Most of the people are suffering in silence. डिप्रेशन किसी को पता भी नहीं है जो डिप्रेशन है बोल के, किसी का पता है। मैंने देखा बहुत लोगों को नहीं उसको डिप्रेशन है, तो आई आस्क्ड सरप्राइजिंगली, तो कुछ प्रोफेशनल है नहीं, कैसे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे उसका चिंता है, लेकिन मैं साइलेंटली मैं सफर कर रही हूँ, उसका चिंता नहीं। तो दिस इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, अवेयरनेस होना चाहिए। इफ यू आर डिप्रेशन, और दूसरा एक चीज, डिप्रेशन हम बता देते हैं बहुत सिनोनिमसली, इसका डिप्रेशन है। कभी अगर कुछ अपसेट हो गया वो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन नहीं है। एटलीस्ट 14 days continuously, if you are feeling very low, then you need to check. There are ways of some tests are there to check. Nowadays these are available online free of cost. People can check that whether the person is having these depressive symptoms or not. General unhappiness, these all come under the emotional symptoms. Then anxiety, agitation. If you are having anxiety, बातों में agitation feel हो रहा है और आ भी रहा है, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, moodiness, irritability, anger, ये अगर छोटे छोटे बातों से very frequently अगर आ रहा है, this is the emotional symptoms of stress. Feeling overwhelmed, जो छोटा सा एक चैलेंज आया, पता नहीं उसको कैसा करना है, वापस वो काम दे दिया, ये तो मेरा भाग गई ऐसा है। हमेशा घर पे भी बाहर पे भी बहुत लोग ऐसे बोलते जो ऐसा है,
loneliness या तो isolation feel कर रहे हैं. Nowadays this isolation loneliness has become a common problem, especially elderly people, and not only for elderly people, people who are along with the family में रहते हुए भी they are feeling lonely. They are not alone. Let us discriminate this term, loneliness and alone. If I am alone, nobody is there. Yes, I know I have to live my life alone. People are living in a family but feeling lonely, isolated. Nobody is talking, because I have observed. So in restaurant, sometimes we go just have a family time, that and for enjoying different kind of food like this. So people, I have observed number of times, family came, 2 kids or 1 kid along with parents. All of them, they're waiting for the food to be served. Everybody, including the child, is on mobile. Then why they have come here? They could sit at home only. So the family time, people forgot that there is a healthy discussion. There is fun within the family. Now fun has converted into a very filthy, all these things through this online. So fun means just we are enjoying with our family. We are expressing our thoughts, our emotion. Everybody are sharing, taking care, taking the responsibility of other people, other members, how we can help. So even in the staying in family, if you are feeling lonely, stress is one of the symptoms, which is emotional in nature. Other mental, emotional health problem, many problems actually they are coming as a byproduct of stress and burnout. We are not paying much attention to that. That is why any kind of, if you see this medical practitioner, doctors, you'll see most of the time. That day also I was listening to a video of a doctor. He was also telling that out of 10, if 8 people are having this psychosomatic symptom, they are not having actual medical issues. They are having those issues which are coming from the mind, the stress. So we need to address mind. Or if we are having high blood pressure, high blood sugar simultaneously, and those who have IBS problem, irritable bowel syndrome, anxiety is the root cause. Their trait is the anxiety. So we are taking pill, but we are not addressing the anxiety issue. So simultaneously, our health has come from the term whole. That is why we are now, especially not in India, there's this awareness. In Western countries, they are considering health in a holistic manner. Along with the medication, they are advising you for yoga, exercises, meditation. And I feel very bad, when I hear the Americans, they are learning meditation, yoga. They have come in India, and we are not interested to learn all these things. That ancient practices which makes us healthy without any medication. Because medication is an alternative actually. Because our body is a phenomenal system. It knows how to heal. छोटा मोटा अगर हो गया वो पता है, लेकिन उसको हम एक्टिवेट ही नहीं करते हैं, because we are leading a very unhealthy lifestyle through stress, through our food habit, and we are not practicing those things which will make us happy, healthy, and joyful. Next slide, please. Yeah. So direct symptom, as I said, physically disease. That means there is no ease in the body. Ease का opposite क्या होता है? Disease. Disease कब होता है? किसी को, एक जन को ले लीजिए जिसका डिजीज हुआ है और आप बात कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा. इमोशनल हेल्थ विच लोअर्स आवर कैपेसिटी. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. हमारा अगर कैपेसिटी उतना है, अगर हम इतना यूज कर रहे, इज इट नॉट अ वेरी अनफॉर्चुनेट?
हमारा जो कैपेसिटी नहीं है, जो स्किल नहीं है, नहीं है, जितना कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करना जरूरी है ये लाइफ टाइम में। तो लाइफ टाइम में अगर हमारा कैपेसिटी को यूज करना है, और हम बताते हैं आउटसाइड प्रोफेशनल एरिया में इतना सारे प्रेशर है, इतना अगर प्रेशर है, उससे भी ज्यादा कैपेसिटी हमारा अंदर है। द क्वेश्चन इज, हमने उसको यूटिलाइज करना नहीं सीखा है, और पता भी नहीं है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ है? हमारा अंदर है। अगर वो कैपेसिटी, वो पोटेंशियल तक पहुंचना है, तो कुछ टेक्निक का जरूरत है, कुछ नॉलेज का जरूरत है, कुछ प्रैक्टिस का जरूरत है। So we'll see how to do that. Then feeling of incompleteness. Most of the time people feel कुछ तो वैक्यूम फील हो रहा है अंदर। क्या वैक्यूम? बहुत लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन हो तो रहा है। इनकम्प्लीटनेस, नॉट इनफ, खुद को गिल्टी फील होता है। ये क्या है गिल्टी फील होना? गिल्टी फील इज नथिंग बट, हमने सोच के भी नहीं देखा कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, कैसे उसको परिवर्तन किया जा सकता है। और हमारा जो सेल्स है, आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि मेरे से आप लोगों का ये सब कोर्सेस में है, सेल्स का कैसा है, डाई होता है, फिर रीबर्थ होता है सारे सेल्स का। कुछ ईयर्स जाने का बाद वो पहले वाला जो हम थे वो नहीं है इन सेलुलर बेसिस। तो हम खुद को बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम डर में रहते हैं। क्या डर? हम सोचते भी नहीं है टू चैलेंज अवर डर। व्हाट इज द डर हियर? व्हाई दिस फियर? व्हाट काइंड ऑफ फियर? टू चैलेंज द आवर फियर। कैसे उसको थोड़ा सा अलग से हम फियर को भी देख सकते हैं। उसके लिए जो करेज, वो लेना बहुत जरूरी है, अगर हमने ये कैपेसिटी जो है हमारा, वो कैपेसिटी तक पहुंचना है। So again, I remind that it is your decision. We feel victim mode. जो अरे ये जमाने में तो, इस लाइफ टाइम में तो भगवान ने हमारे लिए कुछ गलत ही लिख के रख दिया। अगर जब कुछ अच्छा होता है तब भगवान को हम याद नहीं करते, तब, और जब बुरा होता है सब ऊपर वाला का प्रॉब्लम है। तो विक्टिम मोड में हम हमेशा चले जाते हैं। और चले जाते हैं क्या, हम रहते ही है विक्टिम मोड में। काम पे जाते हैं, कोई भी काम, even if the person is a banker, or, and especially I'm talking those in this nursing profession and who would be nurse, because you will be facing those people who are already in so much of physical problem as well as mental problem. Those people are suffering immense of physical problem. Invariably there will be mental trouble also. That is why it is so important to enhance your mental setup to a state so that the इन लोगों का जो तकलीफ आपको धक्का मार के नीचे ना फेंके। नीचे ना फेंके मतलब खुद को लो ना बना दे। मेनी ए टाइम्स दूसरे लोगों का सेवा करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रोफेशन है सेवा करना। वो 24 आवर्स हम सेवा नहीं कर रहे, लेकिन 24 आवर्स हम हमारा लाइफ के साथ है। उसको कैसे बिल्ड करना है, सजाना है, वो हमारा अंदर जो टूल्स वो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं छोटा छोटा टिप्स में आज बताती हूँ। सो योर स्टार्टिंग विद द बिलीफ सिस्टम। कुछ भी एक प्रॉब्लम है, कुछ भी चैलेंजेस है वर्क प्लेस में और किधर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? यू नीड टू चेक योर बिलीफ सिस्टम। इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो है जो ऐसा ही है जिंदगी, अगर मान लिया देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर ऐसा है, ठीक है, देखते हैं कैसा हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं और कैसे जी सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव हम वो कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम, क्या आप एक
अच्छा जिंदगी के लिए are you capable of getting a good life, worthy of getting a good life, वो believe करते हैं या नहीं करते हैं. So if you are, all of you are sitting with a pen and paper, you can write it down, which are extremely important point. You can start with today onwards your belief system. Stress के लिए, stress के साथ या आपका एक अच्छा हैप्पी जिंदगी के साथ जो भी काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं. So you need to understand whether you believe it or not that you are worthy of leading a happy life. वो first question है towards the journey of a happy life. Next slide, please. Yes. So ways to cope with the stress. So the truth will set you free. कभी कभी लगता है बहुत लोगों को थोड़ा, मैडम ये तो कठिन है बहुत, बहुत आसान तो नहीं होगा. क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों कठिन है, आसान नहीं है. नेचर ने जब एक ह्यूमन बीइंग को बनाया, आप लोगों को पूरा पता है नेचर का कितना इन्वेस्टमेंट है. आज अगर हम ये ह्यूमन शरीर को देखें, इसका अंदर जो सोफिस्टिकेशन है, पूरा वर्ल्ड में इतना रिसर्च चल रहा है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन मैकेनिज्म को अभी भी बहुत सारे डिजीजेस है इंक्लूडिंग कैंसर, इसका कारण एग्जैक्ट क्या है किसी को नहीं पता. ये शरीर के साथ चल रहा है, ये शरीर चल रहा है. इट्स अ पैकेज ऑफ द माइंड एंड द बॉडी एंड द एनर्जी विद इन अस. सो इससे बाहर आना, स्ट्रेस से या कुछ प्रॉब्लम से बाहर आना, इट विल, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, बट इट विल पिस यू ऑफ फर्स्ट. थोड़ा मुश्किल होगा. मुश्किल से मुश्किल जो सर्कमस्टेंसेस है वो आपको एक सफरिंग के लिए नहीं है. आई ऑलवेज टेल प्रॉब्लम इज इनएविटेबल बट सफरिंग ऑप्शनल. अगर आप सफर कर रहे तो यू आर चूजिंग टू सफर. नाउ पीपल से कैसे ऐसे 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 चैलेंजेस और आप ऐसे बोल रहे. मैं बोला आपने सोचा क्या, इससे कैसे बाहर आना है, इस सिचुएशन को कैसे देखना है, ये जो टेरेबल सिचुएशन आप बता रहे हैं कैसे देखना है. हम दूसरे नजरिया से देख सकते हैं, वो भी हमारा अंदर है, उसको कैसे ट्यून करना है, एंटेना को जस्ट वेवलेंथ को कैसे मैच करना है. सो पहले पहले स्ट्रेस लेवल क्या होता है या चैलेंजेस हमको बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन इट विल सेट यू फ्री बिकॉज द ट्रूथ इज दिस, no pain, no challenges that comes without any reward. Because if अगर challenges आपका जिंदगी में है और या फ्यूचर में भी आएगा या पास्ट में भी आया था, अगर आपने ये पॉजिटिवली लिया, you can come out of this with a better human being. So stress level भी अगर ज्यादा है, आप ये मान के चल सकते हैं आपका जो कैपेसिटी है उसको सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है अभी तक. जैसे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वीकली इतना घंटा काम करना है, तो चारों तरफ हल्ला, जो इतना घंटा एक्चुअली काम कर सकते हैं हम, उसको आदत नहीं है. तो आदत को चेंज करना बहुत मुश्किल की काम है, सबसे मुश्किल की काम है आदत को कैसे चेंज करना. लेकिन हम आदत को चेंज कर सकते हैं अगर हमने डिसीजन लिया, इफ वी आर डिटरमाइंड to make our life fruitful one, जो भी प्रोफेशन में है. And for this nursing profession, this is the wonderful opportunity to serve as well as to grow. As a human being, we should grow, we should evolve. This is the nature's expectation over the human being. So the problem is the gateway. Yes, and please remember, very, very important, you can note it down. Any kind of problem, you can tell yourself, wow, maybe there is some possibilities to grow, to evolve. You can think many a times, 99.9% of people, what they will say, problem, अरे प्रॉब्लम, वापस प्रॉब्लम, पूरा जिंदगी मैंने गुजार दिया प्रॉब्लम. So problem is always possibilities. Those who are extremely successful in this planet, they took the problem, they turned problem into possibilities.
So if you are struggling with any kind of problem, or any kind of severe challenge in your life, or if you have seen somebody that who are suffering, you just tell them problems are the possibilities, but it will work only when you learn how to perceive ये problem को भी कैसे देखना. मैंने बहुत अच्छा एक कोट किधर पढ़ा था, मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, if somebody is throwing stones on you, rather than getting wounded or injured with the stone, collect the stones, save yourself. Don't think that, oh my God, I'm just gone. No, you are human being, powerful human being. वो भी एक बिलीफ सिस्टम में लाना है. आई एम ए पावरफुल, सुपर पावरफुल ह्यूमन बीइंग. बिकॉज नेचर ने, किसने बोला? नेचर ने ऐसे ही बनाया ह्यूमन बीइंग को. अगर आपने उसको डिस्कवर, सेल्फ डिस्कवर करने के लिए तैयार हो गए तो. नाउ to collect the stones and to make a imarat, make a tower. So सिर्फ मार खाना नहीं है, उससे सीखना है कैसे. So this is the way life is designed. वो हमारा अंदर फिट कर लेना है. प्रॉब्लम अगर है तो पॉसिबिलिटी भी है. हम जनरली क्या करते हैं, हम जो दरवाजा बंद है वो दरवाजा के तरफ देखते रहते हैं, जो दरवाजा खोला है, ओपन है, उसके तरफ हम नहीं देखते हैं. Here we will always see what are the possibilities, what are the ways to see, to perceive the challenges. Daily challenges you can take. Daily जो challenge हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस का भी एक चैलेंज है, प्रोफेशनल वर्क में भी चैलेंज है, उसको दूसरे तरीका से कैसे देखना है और अपना जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाना है. अगर ये वर्क प्लेस में ज्यादा काम के लिए अपना कैपेसिटी बढ़ गया, मतलब अपना पर्सनल ग्रोथ हो गया. Isn't it a wonderful one? Maybe initially we were whining that अरे ये क्या, इतना क्या फंस गए हम ये सब काम पे. लेकिन अपना कैपेसिटी जो बढ़ रहा है, वो बढ़ने के लिए ही नेचर ने अपॉर्चुनिटी दिया है. स्ट्रेस के लिए नहीं है, ओवर स्ट्रेस के लिए, बर्नआउट के लिए नहीं है. बर्नआउट इन लोगों का हो रहा है जो पॉसिबिलिटी नहीं देख रहे, सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे, परसेप्शन चेंज नहीं कर रहे. So always focusing more on the positive. कुछ भी एक प्रॉब्लम भी है, उसमें पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी रहता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है हम पॉजिटिव साइड ही देखते हैं, सॉरी नेगेटिव ही देखते हैं, पॉजिटिव को नहीं देखते हैं. सो उसको देखना शुरू करना है. That is why 2 C's are important. You can, if you are writing with these are the steps to come out of stress permanently. और ये हर एक स्ट्रेस के लिए सेम फॉर्मूला, आई शुड से द फॉर्मूला इज द सेम. 2 C's क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखना है. आज बहुत कुछ लिख दिया जो कैसा कैसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस का चेंज करना, परसेप्शन चेंज करना बहुत जरूरी है. सो कमिटमेंट का भी जरूरत है. That is why I say 2 C's are so important. One is consistency and the other is commitment. And to get access to that creative power, to develop the yes brain. आजकल सब लोगों को पता है न्यूरोप्लास्टिसिटी. हम ब्रेन, पहले लोगों को पता था जो ब्रेन कैनॉट बी चेंज्ड. Nowadays recent studies, research shows that brain is also changeable, its wiring also changeable. हमारा जो केमिकल फैक्ट्री है, बहुत सारे हार्मोन्स, केमिकल्स रिलीज कर रहा है, दैट इज also changeable. The brain chemistry is also changeable just with some practices. और जैसे स्ट्रेस होता है, one kind of chemicals that secret. एंड जब क्रॉनिक हो जाता है स्ट्रेस, तब शरीर में ऐसा पैटर्न हो जाता है, हमेशा ही हम कुछ वैक्यूम फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं. सो डेवलपिंग yes brain. Yes brain is like whenever challenges come, to see what is there. Courage लेना है. You can write also that the courage is very very important to see. वो courage हमारे पास है, ऐसा नहीं है किधर से इंपोर्ट करना है. उसका courage है, मेरा नहीं है. मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया है. उस जो courage का जो बटन है ना, मैंने वो एक्टिवेट नहीं किया है, सिर्फ वो बटन को एक्टिवेट करना है. That's it. Now life will not say yes to you every time. It is the process of life. Life will say no to you also. It is your work to face the life when it says no.
how to pass the period when there is a challenge, when life is telling no to you. It will say no to you in some time or other for sure, because this is the process of life. Why, this is the way nature wants to make us to grow and grow, evolve and evolve, because this human mechanism is not a fixed thing. It is designed to evolve and evolve, designed. We are not striving towards it. So if every individual takes one step every day, believe me, in 1 month we can change a fantastic thing. We can see ourselves, we can change our experience in a fantastic way. But that decision, that commitment and the consistency. आज बहुत कुछ सोच लिया और एक हफ्ता बाद वो याद है, ओ ऐसा नहीं. That is why consistency is a must. For this, journaling in our psychotherapy, journaling is very. What is journaling? I'm telling. Nowadays, online, many journals are available daily. Writing something, writing your thought process, or you can write in the to-do list also on that journal that today I have to do 5 works or 10 works. Now, और मुझे कैसा रहना है? Today I will stay calm and cool. You write it down in the morning. No matter what, I will stay calm and cool. कैसे calm and cool रहना है? I will make a simple exercise now with you for a few minutes. So, सब लिखना है रात को. That is why I told initially, I will give you the task today onwards. रात को सोने का पहले, गैजेट नहीं, अपने साथ बात करना, कैसे था ये पूरा दिन, मैं खुश था क्या, अगर नहीं है कल मेरा एक्सपीरियंस कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ और कर सकता हूँ. टुमारो राइट इट डाउन. सो जितना लिखेंगे, जैसे एक अकाउंट मेंटेन करते हैं कोई बिजनेस में, इट्स अ मस्ट. इफ यू आर नॉट राइटिंग, and I am telling many people use shortcut this notepad of mobile. No, there is an immense difference between, because study shows that if you are writing with pen and paper, use colorful pens, it becomes more effective. And the colorful books also you can make at home. No need to spend much expense for these things. Make these things easy, cheap, but work should be rich. Your work every day should be the rich. So आज कैसा था दिन, कैसे उसको काल वही प्रॉब्लम को दूसरी नजरिया से कैसे देख सकते हैं, कैसा मैं फील कर सकती हूँ. I am growing, I am understanding, my life is changing from these circumstances. So relaxation exercises today, we'll do one small relaxation exercise. Healthy food जरूरी है. Food, अभी क्या food लेना है वो सबको पता है. Even if you do not consult any dietitian, we know what are the healthy food, what are the unhealthy food. अभी ये food को कैसे लेना है. Many people, nowadays, including children, they are constantly in mobile or listening something and they are having their food. It is extremely bad habit. Or watching television. Elderly people are also. I'm not talking about only children. I have seen. They are looking at web series or news. Nobody should eat with any news, especially nowadays all news are what? Negative in nature. We are eating for our nourishment. We don't know that news, the thoughts, it is creating poison in our system. So please avoid just 10 minutes. Try to have this your food, good food, right time. And for the digestion, yes, these exercises are also important. Why I am talking about this exercise also coming into the stress management? Because exercise is also a part of your health management and stress management. So while people are in stress, one hormone that releases, I think all of you know that cortisol is a stress hormone. So with exercise, it gets reduced. And the good hormones like serotonin that starts secreting. So while you are eating, distract all other, no distraction should be there, no heated argument in the dinner table, because you are eating for your nourishment. Pay attention to the food, chew properly,
These are important for your gut health and reducing your stress also. So relaxation exercise, I will make you this how to do that. Helping attitude. Research shows that if you are in a mode to help others, just a small help, you are crossing the road, elderly person are not confident to cross the road, or with this heavy specs, just holding the hand and making that elderly person to cross the road, you will experience good. So to help, small help, it makes us good, because the nature has made us to help others. Plants and animals are making our life nourished. How we are eating fish, chicken, this and that, all egg, milk, are providing us these vegetables. They are sacrificing their life, right? We hardly recognize all these things. Nature is providing free of cost oxygen. We hardly recognize these things. So at the end of the day, just for few seconds even, we remember the entire day, what kind of help we got from nature and all the people, and for whom you feel grateful. It is a very good exercise of gratitude that reduces our stress level a lot, means a lot. So expressing gratitude for few seconds every day, anytime, but especially before you go to bed, it works wonder, because with gratitude practice, it one kind of chemicals that secretes from our, this is the good healthy chemicals, and the other chemicals of this cortisol, that is the stress hormone, it neutralizes, it helps to reduce stress. So or you can write it down also. I make the gratitude practice every day, one page I write. So it is a wonderful way for stress management, and also a self discovery for your enhancing your capacity. And still, after that also, if you are unable to handle stress, then professional help you must take, because your life is precious to you. You should love and respect it. Next slide, please. So, attitude, this attitude is everything. If you look, your life is a process of evolving, process of personal growth and transformation. Even if the extreme challenges, life changes, attitude is important. How many of you know that A stands in the alphabet, right? One. Like this, T, if you add the letter, what is the sum, 100. Where the T stands in this alphabet, like 23 or something, or 22, like this. If you add, after that you can calculate. You will get, if you add, say D is 4, E is 5. If you add all this letter, you will get the summation is 100, because your attitude matters. What is the attitude of yourself about this life? It's extremely important. It will decide your quality of life. Your organization will not decide your quality of life, but your attitude towards everything, it will decide your life. So your outlook, your attitude needs to change. So people who handle stress, even in their difficulties, with that attitude, can change their life. Next slide. Breathing exercise is very much helpful to reduce stress. We'll practice for a few minutes. So remember, take a note, the breathing practice, or even whenever you are walking, you can take your breath consciously. It will reduce your stress. Just like when you are in work, or you have attended lecture, and after that, just that you are making your inhalation and exhalation little longer. It will
help you to reduce your stress, along with the other technique that we discussed, your thought process. Next slide. I think this was the last slide. Yeah. So thank you so much for listening, and we will make one small exercise. Is it okay? Yeah. So all of you, wherever you are, just sit comfortably. Your back straight. Adjust your posture in a comfortable position. Pay attention to your breath. Gently close your eyes. Pay attention to your breath today. Take the opportunity, purposely pay attention to your breath, which is available to you all the time. You may not have paid attention to your breath, which is a wonderful system that you are surviving here. While you are inhaling, take breath little longer than as usual, but comfortable. Exhale little long. Again inhale. With each and every cycle of inhalation and exhalation, just observe it. With every cycle of inhalation and exhalation, pay attention to your abdominal region. It is inflating and deflating. Along with the sensation of your breath, pay attention to your stomach region only. Now, gradually shift your attention near your chest region. Perhaps with every cycle of your breath, you are becoming more and more relaxed. Pay attention to the movement of your chest with every inhalation and exhalation. Try to pay attention whether there is any stiffness in your body or not, in any part of your body, any restlessness or stiffness or irritation or discomfort in any part of your body, maybe in head or back region or in your legs. Just pay attention towards it. No need to do anything. Don't get judgmental with any discomfort. Just pay attention and stay on your breath. Any thoughts which are not needed right now, bring your attention from your thought towards your breath. Stay hooked on your
with your breath only. How are you feeling now? If you are feeling relaxed, hopeful, let this sensation of relaxation get soaked in each and every cells in your body. You can keep your right hand on your chest gradually. You can say, I am a powerful human being. Enough capacity is invested by nature. I will explore and I will use all my capacity to make my life wonderful, and I will help others to live a life which makes a real sense. We are here in this planet to become happy, joyful, because we deserve it. With this gratitude towards nature, with a smile in our lips, we can open your eyes slowly. Take your own time to open your eyes slowly. You can share your experience and through uh, this chat box also. How did you feel through this exercise? Yes, Aisha, it was relaxing. Thank you so much. This It was a soothing experience. Soothing experience. Thank you so much, sir. So this exercise, because there's a time constant. So this simple exercise, if you do, if you feel anxious at any point of time, that is why I say keep your right hand, because it's a research thing. Whenever you feel anxious, immediately, if possible, not in front of all, it is not possible, keep your right hand on your chest, because it is already researched. Thank you so much. Thanks everybody that you did it. Your right hand on your chest, and feel, you will understand, you will experience that you're coming down, your anxiety is getting reduced, your stress is getting reduced, and mental well-being will anyway be enhanced. It is the byproduct of stress management. Is the outcome is the well-being, mental well-being. So this was my presentation. Everything. Now, any question that I can address? If you have any question from your experience, from or from today's presentation, if you have any query. So no question. No, basically, I have no query, but ma'am had put up in very well mannered, and it was no doubt it was people may say or whatever it is. उन्होंने अभी तक जितने आए उसमें उन्होंने जो हिंदी यूज किया बहुत बढ़िया था, बढ़िया हिंदी था उनका. आई थिंक मैडम स्टेज हियर इन न्यू बॉम्बे ओनली ना मैडम. Yeah, yes, sir. Yes, मैं sir. न्यू बॉम्बे मैं भांडुप में रहता हूँ. वो बॉम्बे में अच्छा भांडुप अच्छा में रहता अच्छा अच्छा अच्छा, भांडुप में रहते हैं। मैं न्यू बॉम्बे कोपर खरे में मैं रहती हूँ। हूँ. वो तो मेरे ऑपोजिट ही है एक्चुअली. हाँ वो बीच में वो खाड़ी है. आप वो हाँ बाजू हाँ रहते हैं और हम ये बाजू रहते हैं. हाँ हाँ हाँ, पता है। हाँ, अभी एक ब्रिज भी आने वाला है मैडम अपने विक्रोली से वहाँ. अच्छा 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 अच्छा। I wrote your mobile. I couldn't get the all numbers.
It is 932 double double zero. 60 Uh, 960. 960. Okay, okay, okay. I will get connected to you, madam. Don't worry. I'll get Sir, connected. sure, sir. Sure, sir. So I am really happy that I was looking that many a times now these practices are sometimes not familiar. सो मैंने देखा 62 लोग और 62 लोग ही थे इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो people are practicing, people are listening the same message. I am just in this process of to give that we have this faculty, let us utilize this thing, let us utilize this wonderful gadget. This is the human being we are built, and we start changing the way we think, the way we feel, the way we believe. This is the most important message of today, that we should change our belief, our thought, our feeling, our emotion, and we can change our life itself because it is designed in that way. So No, very, thanks. Yeah. very important is what, madam, Yes, sir. Aradhna madam, कि दिस यंग क्राउड जो अभी अपना जो ट्रेन हो रहा है आपके नर्सिंग इंस्टीट्यूट में, जो भी बच्चे आ रहे हैं, बच्ची आ रही है, वो क्या है कि मैं मानती हूँ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट से नो टू इट, बट यू शुड नॉट बी टेक्नोलॉजी। फिर वो टेक्नोलॉजी आपको टेक ओवर करने चालू हो गई है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें सर मैं एक बात बता रही हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी है, अभी देखिए ये जो नेशनल वेबिनार जो वर्कशॉप है, ये टेक्नोलॉजी के लिए ही एकमात्र पॉसिबल है। अभी ये टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना वो हमारे ऊपर है ना, हमारा डिसीजन है। जैसे एक हमेशा एक चीज हम यूज कर रहे हैं, जब भी उसका जरूरत नहीं है वो साइड में रखना चाहिए। अभी हम वो उसको जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसको कभी साइड में रखना है वो हम भूल गए। जब जरूरत नहीं है उसमें साइड में रखना सीखना चाहिए, उसको आदत बनाना चाहिए। अभी क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए माइंडफुल लिविंग जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, सिखाती हूँ, ट्रेनर भी बनाती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। हैव ए माइंडफुलनेस, माइंडफुल लिविंग, सो यू विल बिकम माइंडफुल टू अंडरस्टैंड कभी क्या यूज करना है, कभी क्या नहीं यूज करना है। तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करना ही भूल गए। मैं नहीं कभी नहीं बोलूंगी हम नहीं जानते, हम सब जानते हैं। क्योंकि ये जो गैजेट है, जितना सारे वंडरफुल गैजेट्स है, स्मार्ट, हम सोचते हैं हम इडियट है और वो स्मार्ट है, हम उससे भी कई गुना स्मार्ट है। द थिंग इज वी आर नॉट यूजिंग दिस स्मार्टनेस, क्योंकि वो स्मार्टनेस कहाँ है, वहां नहीं अंदर है। वो हमारा अंदर खजाना है। उस खजाना तक पहुंचने के लिए आज जो जो चीज मैंने डिस्कस किया, वो सारे प्रोसेस को यूज करके हम हमारे अंदर खजाने तक पहुंच सकते हैं। यस, मोस्ट। Thank you so much. Thank you so much. I'll be very much, in a mood to every time I want to help people, the way I can motivate people and to make their life better and better.
Thanks a lot. Your name, ma'am? Anna. So sweet. You're, you, you are sweet in your, face and in your voice. Everything you conducted so sweetly, so nicely, so gracefully. Very nice. And I again thank uh, our principal ma'am for her kind invitation and the opportunity she gave today. Thank you so much. Oh, Thank you, sir. Arvind yes, sir. yes, yes, Thank yes, you. yes, मैडम पूरे Yes, सोमवार मंडे से उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है डॉक्टर आराधना ने बहुत yes, बढ़िया yes. काम किया Of course, of course, of course. रियली आई अप्रिशिएट इट रियली Yes. क्योंकि ये सब प्रोग्राम का जरूरत है. क्योंकि इतने लोगों को एक साथ लाना वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कोई भी आसान काम नहीं है वो No, no, no. And people are attending also. Nowadays, people, there's, क्योंकि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, कोई अटेंड कर रहा है ना कोई दूसरा काम कर रहा है, वो समझ में नहीं आता है. लेकिन लोग सुन रहे हैं. ये मेडिटेशन का टाइम पे भी लोग बैठे थे, तो बहुत बड़ी बात है. मतलब दे आर इंटरेस्टेड टू नो. सो दैट motivation we need to see on people. Then only our world can be changed. अभी देखो मैडम एक 1 मिनट ओनली आई टेक Yeah, yeah. जब आराधना मैडम ने और हम लोगों ने पढ़ाई की आई एम तो वेरी ओल्ड पर्सन आई एम एक्चुअली इनटू ट्रेनिंग डिवीजन बट आई एम जस्ट अटेंडिंग इट आई एम ए रिटायर्ड एयर इंडियन ऑफिसर आई वाज विद एयर इंडिया एज एचआर हेड Okay, okay, sir. Nice. Very nice. Very nice. तो हमने जब पढ़ाई की तब हमने बुक से पढ़ाई की है और आज बच्चों को इमीडिएटली गूगल दिखता है सब आजकल डिक्शनरी का कुछ यूज नहीं होता है, सब कुछ गूगल में. हम भी नहीं कर रहे. मेरा भी कितना सारे डिक्शनरी, पहले हम जब पढ़ाई करते थे इतना सारे बड़ा बड़ा डिक्शनरी हम अभी तो गूगल सब तो. हाँ, गैजेट्स. एग्जैक्टली. और बुक रीड करना जो है, उसका भी जो आदत है वो भी अभी जा रहा है. वेरी डिफिकल्ट बट इट वाज अ वेरी गुड सेशन आराधना मैम and your यस, यस. Dr. Pincy also, madam. Really great initiative by your Jabalpur Institute. Very great, very great, great. Now I will be permanently connected with you all. Don't worry. Very nice. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Malabika ji. Thank you. Yes, yes, Thank sir. Most welcome, sir. Thank you also. you. Yes.